We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. So in next lecture we will discuss about physiological change during the pregnancy. Now we will discuss about the parturition. So what is parturition? As I said, it is an act or process of giving birth, also known as childbirth or as labor. So here you can see the diagram, right? Image. So there is a pregnant woman, she is in labor, right? And it is about to give birth. So there are some important organs, that is brain, endocrine gland, that is hypothalamus, right? Then below the hypothalamus there is posterior pituitary gland, then another is placenta, then here uterus, and there is a baby, and here baby's brain and the kidney, and above the kidney there is adrenal gland, here adrenal gland, and this which is important in parturition physiology. So in the first, second and third trimester, where estrogen, progesterone level rise, they actually preparing the mother for the labor, right? So as we discussed in last video, right? So in the first, second and third trimester, where estrogen and progesterone level rise, they actually preparing the mother for the labor. So here the first, they are the steps that are involved in labor. So here the first stage, that is, here you can see fetal stress that stimulate the corticotropin hormone, that is also known as ACTH, corticotropin hormone. So stage that the fetus want to leave the womb. So there is fetal stage that stimulate corticotropin hormone, that is produced by the anterior pituitary gland. Here the anterior pituitary gland, and it stimulate cortisol release from the adrenal gland. So here first stage, right? This is blurring. Here. So this is the first stage. So fetal brain, here the fetus that stimulate cortisol hormone, that is produced by anterior pituitary gland, and that stimulate cortisol release from the adrenal gland. Now next there is the second stage, that is when that is cortisol release, that release affect the placenta, right? So in 3 things, it when cortisol is released, that affect the placenta, and 3 things. So here the cortisol affect placenta. Here you can see the second stage here, right? And the third stage, cortisol affect the placenta, that decrease the production of progesterone from the placenta, decrease the production of estrogen from the placenta, and increase the prostaglandins production in the placenta, in the uterine, and this lead to uterine contraction. So this why in month 9 we see there is the decrease in the progesterone and estrogen levels, and increase in the prostaglandin, means prostaglandins. So what is prostaglandin? That means molecular actually found in the body, but it causes uterus to contract, and thus helping the baby to leave the uterus. Now we will discuss the 4 point here. 4. So as baby pushing out, they cause uterine and cervix distress, and thereby stimulating some sensory nerve fibers around the area. So uterine and cervix stretch
to stretch and stimulate sensory nerve fibers here. Stretching of the uterus and cervix, and thereby they stimulating the some sensory nerve fibers around this area. Now fifth point. So in this fifth point, the signaling to the give the signaling to the hypothalamus to produce oxytocin, right? So here fifth point, stimulate sensory nerve fibers. The stimulation of sensory nerve fibers will stimulate these stimulated sensory nerve fibers will stimulate oxytocin production from the hypothalamus, right? Now in the sixth point, what happened? The oxytocin that is produced by hypothalamus will be stored in a posterior pituitary gland. So 6 point, hypothalamus that produce oxytocin that is stored in posterior pituitary gland. So this is the 6 point. Now here it will store in a posterior pituitary gland. Now moving to 7 point. So this oxytocin released from pituitary gland, it do two main things. This oxytocin posterior pituitary release the oxytocin. So this oxidation do two main things. First is uterus contraction, right? Uterus to contract, that will help to baby to leave the uterus, and it also stimulate production of prostaglandins by stimulating the uterus to make more prostaglandins, which again cause uterus to contract. So first is uterus to contract, cause uterus to contract, then stimulate production of prostaglandin, stimulate uterus to make more prostaglandin, right? And this whole cycle is continuous because uterus is contracting, baby's head, uterus is contracting and the baby's head pushes against the cervix and pushes out there by stimulating the stretch receptors, and it will stimulate hypothalamus here. It will stimulate hypothalamus to produce more oxytocin, right? And this all cycle that is continuous, but after the some time uterus will contract. Here uterus will keep contract until the baby born. So uterus continues to keep contract and until the baby leave the uterus. So till the baby born. So it is uterus keep contract until the baby born. So this is all about the parturition. Now we will discuss about the stages of the parturition. So here labor or parturition, there are 3 stages, right? So here the 3 stages 1, 2 and 3. When normally labor usually occurs, that is after the 37 weeks, that is full term birth, and would refer to delivery occurring before the 37 to 42 weeks of gestation. But during the certain situation and during the certain circumstances, labor might occur before the 37 weeks, and if it is occur, it is known as premature labor, right? So first stage here, the first stage when woman about to deliver, so that will enter into the stage 1 of the labor. It divide into latent, initial or passive or active, right? There is a two phase, latent or also known as initial and passive, and second is active. So when latent is start, labor begins cervix, right? So labor that begins cervix actually being stretched by the baby due to the release of certain factors, that is stretching of cervix, and that send signals to the brain and send signals to the hypothalamus and pituitary gland to release hormone, that is oxytocin. So oxytocin that travel to uterus by the blood and start stimulating uterine contraction. When fetus
or baby is ready to go out, it will also release things from itself, which also stimulate the placenta to secrete the prostaglandins, and it stimulate uterine contraction as well. मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, जो लेबर कब स्टार्ट होगा, जब जो सर्विक्स है वो एक्चुअली स्ट्रेच होना स्टार्ट करेगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, एंड जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच होगा एंड वो सिग्नल सेंड करेगा ब्रेन को, एंड ऑल्सो सेंड करेगा सिग्नल हाइपोथैलेमस को एंड पोस्टीरियर ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू रिलीज द हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन, एंड जो ऑक्सीटोसिन है दैट ट्रैवल टू यूटेरस बाय द ब्लड, एंड इट विल स्टार्ट ऑल्सो स्टिमुलेटिंग द यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन. जब जो फीटस और बेबी जो है इट विल रेडी टू गो आउट, इट ऑल्सो रिलीज सम थिंग्स राइट इटसेल्फ, सो वो भी हेल्प करेगा स्टिमुलेट में प्लेजेंटा का, एंड ऑल्सो दे इट विल सिक्रेट द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड उसकी वजह से क्या होगा, यूटेरिन का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा. सो ऑल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन बाय ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसकी वजह से क्या होगा, सर्विक्स दैट स्लोली स्ट्रेच आउट इवन मोर एंड दैट साइकिल इज कंटिन्यू. इट इज़ नॉन एज पॉजिटिव फीडबैक लूप. सो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन है यूटेरस का दैट इज़ मोर कॉन्स्टेंट एंड दे कम इन वेव एंड रेगुलर रिदम. सो उसके बाद क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है ड्यूरिंग द लेबर दैट इज डिफाइंड एज बीइंग रेगुलर राइट, एंड इट इज़ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन. जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट करेगा स्लोली एंड बिगन्स टू सी द थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, दैट इज़ विच अफेसमेंट ऑफ सर्विक्स. उसके बाद क्या होगा, दैट विल प्रोग्रेस टू फाइनल आउटकम दैट इज सर्विक्स डायलेशन. उसके बाद क्या होगा, सर्विक्स का डायलेशन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, पर्टिकुलर सर्विक्स वो डायलेट होगी इनटू द 3 सेंटीमीटर. सो जैसे जो लेबर है वो प्रोग्रेस होगा, ये सर्विक्स का डायलेट होना स्टार्ट होगा. जो जब सर्विक्स 3 सेंटीमीटर जितने डायमीटर में डायलेट होगा, सो दैट इज़ नॉन एज इनिशियल फेज ऑफ स्टेज 1 ऑफ लेबर राइट, एंड दिस फर्स्ट स्टेज एंटर इनटू द सेकंड दैट इज एक्टिव फेज ऑफ स्टेज 1 ऑफ लेबर. सेकंड स्टेज में क्या होगा, दैट इज एक्टिव स्टेज में क्या होगा, जो सर्विक्स है वो कंटिन्यू होगा कंटिन्यूस वो डायलेट होगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन उसमें जो होगे दैट इज़ रेगुलर एंड दैट इज़ मोर पेनफुल. उसके बाद क्या होगा, जो सर्विक्स जो है दैट इज़ से फुली डायलेटेड होगी व्हेन इट गोज़ टू 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर. 10 सेंटीमीटर जितना वो डायलेट होगा तो इट इज़ नॉन एज फुली डायलेटेड सर्विक्स राइट. उसके बाद क्या होगा, सो इट यूजुअली डिलीवर हेड दैट इज़ इसके बाद अगर ये फुली डायलेट हो रहा है सर्विक्स तो उसके बाद आपको जो बेबी है उसका हेड बाहर निकलना मतलब स्टार्ट होगा. सो क्राउनिंग ऑफ द बेबीज हेड. सो यूजुअली जो डिलीवर है हेड का दैट इज़ फर्स्ट, पहले हेड डिलीवर होता है, जैसे मैंने आगे भी बोला पार्ट्यूशन में हमने स्लाइड जो थी उसमें पढ़ा राइट. सो यूजुअली पहले हेड जो है बेबी का वो डिलीवर होता है, बाहर निकलता है. बट अगर इस सिचुएशन है जिसमें फुट या उसके लेग भी पहले बाहर आ सकते हैं, तो वो जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीच पोजीशन. सो उसके बाद क्या हो गया, यूटेरस जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल टाइम, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑल टाइम बिकॉज देयर इज़ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स राइट. सो आफ्टर दिस दैट विल एंटर इनटू द सेकंड स्टेज. नाउ व्हाट इज सेकंड स्टेज, जो पहले स्टेज में हमने क्या देखा, जो पहला स्टेज जो है वो डिवाइड होता है 2 स्टेज में, लैटेंट इनिशियल और पैसिव, एंड सेकंड इज एक्टिव. इसमें क्या होगा, रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं विथ थिनिंग इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स एंड अंटिल कब तक, जब सर्विक्स वो डायलेट नहीं हो जाता टिल द 10 सेंटीमीटर. जो लेटेंट में उसमें 3 सेंटीमीटर, ये जो लेटेंट है उसमें वो 3 सेंटीमीटर जितना डायलेट होगा, और एक्टिव में फुली डायलेटेड दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, हियर 3 सेंटीमीटर. नाउ मूविंग टू सेकंड स्टेज में क्या होगा, फुली सर्विक्स डायलेशन अंटिल बेबी इज़ बॉर्न. जो सर्विक्स है उसका डायलेशन होगा अंटिल द बेबी बॉर्न दैट इज़ 10 सेंटीमीटर.
dilation of cervix, and uterus is still having painful contraction. And once the baby born, labor enter into the third stage. So what is third stage? That is essentially the delivery of the placenta. So placenta जो है वो slowly discharge होगा from the uterine lining से, and जो uterus है that is still contracting, वो still contract करेगा, and is actually this time जो mother है is given injection. ये टाइम पे मदर को इंजेक्शन दिया जाता है to stimulate the delivery of the placenta. So this is careful delivery of placenta. If there is no careful delivery, right, so it will cause hemorrhage. So once the baby deliver, the clamp that is put on the either side here, if there is a here is a baby, ये जो umbilical cord होगा यहाँ पे हम दोनों साइड clamp लगाएंगे. So here the clamp put on the either side of the umbilical cord and it will be cut. And जो ये umbilical cord है it is used, right, और जो एम्बिलिकल कोड में से एम्बिलिकल जो आर्टरी होती है और वेन से वहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ पीएच. सो इन द समरी ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ लेबर, स्टेज 1 क्या है, 2 स्टेज में डिवाइड होता है, लेटेंट एंड एक्टिव, रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन विथ थिनिंग ऑफ इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स until cervix reaches 10 centimeter in dilation, stage 2 full cervix dilation until baby is born, and stage 3 placenta delivery. So this is all about labor, parturition or childbirth, right?